A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Dear students, it is business studies of class 12th. Today, as you already know, we are going through the chapter directing, and let us know that what are the different elements of directing. Dear students, directing, it has 4 elements. First is supervision, second is motivation, third is leadership, and fourth is communication. First, let us know that what is supervision. Dear students, you know super and vision. This is the combination of 2 words, super and vision. Super means over and above, and vision means art of seeing. So we can define supervision, the work of subordinates, supervising the work of subordinates by the manager. Yes, when a manager supervises the work of subordinates, we can say that in that very context we can say that he is above the workers, and he has the art of seeing the work of subordinates. So it can be defined as supervising the work of subordinates by the manager, or overseeing what the subordinates are doing and giving them directions. So in this very context, a supervisor supervises the work of subordinates, or a manager supervises the work of subordinates, and at the same time he sees what they are doing and he gives them directions. So this is supervision. But second meaning of the supervision is, so in this first meaning what we saw, that a manager is just overseeing the work of subordinates, what they are doing, and at the same time he is giving them directions. Second meaning of this supervision is that a supervisor supervises the work when the work is in operation, or he supervises the work at operative level. So in this very context, in the second meaning, we say that he is not just directing them, he is not just overseeing them, but what he does, he is just supervising them, not directing, he is just supervising them while they are doing the work. He gives them the suggestions. He is not directing them, but he is just having consensus with them. He is just having dialogues with them. So when they are at work. Now, Davis, a famous economist, he says that supervision is the function of assuming that the work is being done as per plan and instructions. So he says, उसका मानना यह है कि सुपरविजन एक ऐसा काम है कि जिसमें एक सुपरवाइजर क्या करता है, जब वो काम को देखता है और वो उसको ये यकीनी इस बात को यकीनी बना लेता है कि काम जो है वो प्लान और इंस्ट्रक्शंस के तहत चल रहा है. Supervision is the function of assuming that the work is being done as per plan and instructions. So this is Davis. He defines what is supervision. Now, what is the role of supervisor? We just knew that what is supervision, but what is the role of supervisor? Because we are just defining the elements of directing, and in directing there comes the function of a supervisor. So what we have to do, we have to see that what is the role of supervisor in any type of organization. First is, he is a link between workers and management. हम जानते हैं कि सुपरवाइजर जो है ये एक पुल है, ये एक लिंक है वर्कर्स के दरमियान और मैनेजमेंट के दरमियान. ये वर्कर्स को देख लेता है, उनको डायरेक्शंस भी देता है, उनके साथ बात भी करता है, और फिर ये जो है मैनेजमेंट जो है उनके मुख्तलिफ ये जो डायरेक्शंस हैं या उनके मुख्तलिफ मकासद जो हैं
उनको वर्कर्स तक पहुंचा देता है. सो ये है he works as a link between workers and management. Second, the role of supervisor, it is that supervisor is the direct contact with the workers. He has the direct contact. He has direct contact with workers. So this role of supervisor is that he is directly in contact with the workers. वर्कर्स जो हैं, काम करने वाले जो हैं, सुपरवाइजर को उनके साथ बराह रास्त रायबता होता है, वो उनके साथ बराह रास्त मुंसलिक होता है, उसको दरमियान में और कोई नहीं होता है, वो डायरेक्टली वर्कर्स के साथ बातें करता रहता है, मशवरा करता रहता है. तो ये दूसरा काम है कि दूसरी बात है कि सुपरवाइजर का रोल क्या है एक कंपनी में, एक ऑर्गेनाइजेशन में. थर्ड है अवॉइडेंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड मिसअंडरस्टैंडिंग. अगर कोई भी तजाद हो जाए या मिसअंडरस्टैंडिंग, बात कहने में समझने में कोई गलती हो जाए, तो उसको अवॉइड करने में सुपरवाइजर जो है ये एक कलीदी रोल अदा करता है. सो ही हैज ए वाइटल रोल टू प्ले in avoiding the conflicts and understanding between the workers and the management. So ये सुपरवाइजर ही है जो इन तजादात को, जो इन झगड़ों को, जो इस आपस में जो इनकी ये मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, उसको अवॉइड करने में एक अहम रोल अदा करता है. इसका इसलिए वो सुपरवाइज़र का एक अहम रोल होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि डायरेक्टली रिलेटेड होता है वर्कर्स के साथ, ये लिंक होता है बिटवीन वर्कर्स एंड मैनेजमेंट, और इसके साथ साथ ये किसी भी गलत फहमी को दूर करने में एक अहम रोल अदा करता है. तो फोर्थ जो है इज यूनिटी अमंग वर्कर्स. वर्कर्स जो है उनमें इत्तेफाक कायम करने में सुपरवाइज़र जो है एक अहम रोल अदा करता है, क्योंकि वर्कर्स जो है कभी भी उनमें ना इत्तेफाकी पैदा हो, कभी भी वो एक दूसरे से लड़ झगड़ें, तो उससे जो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दे विल बी इफेक्टेड बैडली. सो व्हाट ही डज सुपरवाइजर, ही क्रिएट्स यूनिटी, ही मेंटेन्स यूनिटी अमंग द वर्कर्स. तो यूनिटी के साथ ही इस ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो तकमील पा सकते हैं, वो उसके हुसूल में कामयाब, उसके हुसूल में मदद कर सकते हैं. सो यूनिटी अमंग वर्कर्स, इट इज क्रिएटेड बाय द सुपरवाइजर इन द ऑर्गेनाइजेशन. एंड देन फिफ्थ, इट इज मोटिवेटिंग वर्कर्स, यानी ये वर्कर्स को काम करने के लिए मोटिवेट करता है, उनके साथ सलाह मशवरा, उनको मुख्तलिफ इंसेंटिव्स देने में इसका अहम रोल होता है. तभी क्या होता है, उनकी ज़रूरियात को समझने में इसका एक अहम रोल होता है. तभी कहा जाता है कि वर्कर्स को मोटिवेट करने में इसका अहम रोल होता है. सुपरवाइज़र he has to motivate the workers in an organization. He has to make them the work so that the organizational objectives can be achieved. And sixth is ट्रेनिंग ऑफ वर्कर्स. वर्कर्स को जब भी कोई ट्रेनिंग दी जाती है, उनके ट्रेनिंग का मसला जब भी होता है, तो उसको सुपरवाइज़र ही सुपरवाइज करता है. वो जानता है कि किस किस्म की ट्रेनिंग चाहिए, क्योंकि वो डायरेक्टली रिलेटेड उनके साथ है. वो उनके वर्कर्स के साथ बातचीत करता है, वो उनके मसाइल को जानता है, वो उनकी कमज़ोरियों को जानता है. इसलिए दिस सुपरवाइज़र when he trains the workers, he is directly related to the workers. So while training the workers, he has a vital role to play to train the workers according to the problems faced by them as per operating the modern technology. So he has to train the workers, and he has to be there to train the workers. And then seventh, it is leadership qualities. यानी सुपरवाइजर जो है इसमें लीडरशिप क्वालिटीज होती हैं. ये वर्कर्स की रहबरी कर सकता है, उनको आगे उनको एक सही सिमत दे सकता है. इस तरह से उसका सुपरवाइजर का रोल जो है, ही हैज टू प्ले द रोल ऑफ ए लीडर इन एनी ऑर्गेनाइजेशन. ही हैज टू मेक द वर्कर्स टू फॉलो हिम. द वर्कर्स फॉलो हिम because he has the leadership qualities. He is a leader in any type of organization. His followers, his supporters are the workers behind him. Then last, eighth, analysis of
work performed. اب یہی سپروائزر جو ہے یہ دیکھتا ہے کہ کتنا کام ورکرس نے کیا ہے, کس حد تک انہوں نے کام کیا ہے, how much they have been successful in to achieve the organizational goals, how much they have been successful to proceed in the right direction. تو اس کی انالیسس جو ہے, ان کی پرفارمنس جو ہے, وہ دیکھنے میں یہ جو سپروائزر جو ہے اس کا ایک اہم رول ہوتا ہے. سو دیز آر دا ڈفرینٹ, دس از دا رول آف سپروائزر in any type of organization. So now this is supervision. Second is motivation. Second element of directing is motivation. Motivation is a Latin word. It has been derived from movers, which means to move. Motivation has been derived from the Latin word movers, which means to move. So it is a function to prompt, to compel, to energize an individual. کسی بھی انڈیویجول کو کسی بھی کام کرنے کے لیے تیار کرنا, مجبور کرنا, اس میں طاقت پیدا کرنے کی صلاحیت جو ہے, طاقت پیدا کرنے کا کام جو ہے وہ موٹیویشن کا کام, وہ موٹیویشن ہے. یعنی وہ اس کو کام کرنے کے لیے مجبور کرتا ہے, اکساتا ہے, اس میں انرجی بھر سکتا ہے. یہ ہے موٹیویشن. ورکرز کو کام کرنے کے لیے, کسی بھی انڈیویجول کو کام کرنے کے لیے. سو اٹ از موٹیویشن, اٹ از ٹو ایکٹ اور بہیو ان اے پرٹیکولر مینر, تاکہ شخص جو ہے, یہ انڈیویجول جو ہے, آرگنائزیشنل گولز کو اچیو کرنے کے لیے یہ ایک خاص سمت میں آگے بڑھ سکتا ہے. یہ ہے موٹیویشن. یعنی موٹیویشن ہی ایک ورکر کو آرگنائزیشنل گولز کے تحت ڈائریکٹ کرتا ہے, کام کرنے کے لیے اکساتا ہے, مجبور کرتا ہے. He uses different channels, he uses different ways, but his main focus is to motivate the worker to achieve the organizational goals. So it is motivation which makes the workers to move in a particular direction. So I think it is enough for the day, because you have to go through these elements of direction. So first we have discussed that is supervision, and the second is motivation. I think you would have got it, and you will go through it yourselves, and you will see that what are the different things, what are the different elements of directing. Thanks for the day. Hope we will, inshallah, we will go through this motivation, leadership and communication again tomorrow. Thanks for the day.